Needing 300 grams of all-purpose flour, 300 gram maida, half teaspoon of vanilla, आधा teaspoon vanilla extract, 150 grams of butter, 150 gram makhan, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking powder, 3 अंडे, 3 eggs, 250 grams of granulated sugar, 250 gram granulated sugar, teaspoon of baking soda, 1 teaspoon baking soda, आधा cup dahi, half cup of yogurt, आधा cup दूध, half cup of milk. First, take your flour, baking soda, and baking powder and mix them all up. And make sure to sift all 3 ingredients. पहले आप अपने flour, baking soda, baking powder को sift करो और आप इनको mix करो. मेरा मैदा पहले से sifted है. My flour was already sifted. Then cream together your butter and sugar. फिर आप अपनी मक्खन और चीनी को cream together करो. You can either use a hand blender for this or a stand mixer. आप इसको hand blender से भी कर सकते हो और stand mixer से भी, मगर मैं stand mixer से कर रही हूँ. But I'm doing it using a stand mixer. Once your butter and sugar cream together, add in your eggs. जब आपके butter और sugar cream together हो गया, आप अपने एक करके अंडे डाल दें अंदर. Add in your vanilla extract. अब हमारा vanilla extract अंदर डाल. Now add your yogurt, milk, and dry ingredients into your stand mixer or hand mixer and mix. अब हमारा अपना दही, दूध और dry ingredients इसमें डाल के mix करेंगे. Divide your batter into 2 pans lined with parchment paper and oil and bake at 225 degrees Fahrenheit for 20 to 25 minutes. अब हम अपना batter 2 pans में divide करेंगे जिन पे parchment paper लगा हुआ और oil हुआ है और फिर हम 225 degrees Fahrenheit पे 20 to 25 minutes के लिए bake करेंगे. After your cake is baked, we can flip it and then you can refrigerate this for 2 hours to overnight. अब हमारा केक हो गया, हम इसको cellophane में wrap करके 2 hours to overnight के लिए fridge में रख रहे हैं. For our buttercream frosting, we're going to be needing 200 grams of butter, 200 gram makhan, 50 gram icing sugar, 150 grams of icing sugar, 50 grams of milk powder, 50 gram milk powder, grams of condensed milk or 50 gram condensed milk. Cream together your butter and sugar. पहले हम अपना butter और sugar को cream together करें. Either use a stand mixer or a hand mixer to do this. आप इस stand mixer और hand mixer से कर सकते हैं. Changing my hook to a K hook. मैं K hook में change कर रही हूँ. Once you can see that your butter and icing sugar has creamed together well, add in your condensed milk and milk powder. जब आपके देख लें कि आपका बहुत सारा smooth हो गया butter और icing sugar, आप अपने condensed milk और milk powder डाल दें. Have it, our buttercream is done और हमारा buttercream हो गया. It is the next day and our cakes have refrigerated for overnight. अब ये दूसरा दिन है और हमारा केक overnight refrigerate हो गया. हम अब इसके edges को equal करने के लिए काट रहे हैं. Now we are going to cut the edges to make them equal. I have a whippy whip of cream which I'm whipping up. मेरे पास इधर अपनी whippy whip cream है जो मैं अभी whip कर रही हूँ. Now that our whipped cream is done, let's head to frosting. अब हमारा whipped cream हो गया, अब हम अपने केक को frost करते हैं.
Over here I have my first layer of cake and I'm putting some whipped cream on it, and I'm just going to spread it all over it, like on the sides and on top, to make a nice clean layer. And then I'm going to put the second layer of cake on top, and then I am going to frost the whole thing using this. मेरे पास अभी अपना first layer जो मैंने whip कर लिया, और मैं अपना second layer को भी इसके ऊपर डाल के इसको same process repeat करूँगी. So now I'm just going to repeat the same process of whipping the whole thing. Refrigerated the cake for a few hours, and over here I have some of my buttercream which I've dyed in a red rosy color. मैंने अपने केक को refrigerate किया, और मैंने पास इधर अपना buttercream है जो मैंने red rosy color में किया हुआ है, और फिर उसको मैं साइडों पे ombre texture दे रही हूँ, and on the side I'm just giving like an ombre texture. So now I'm just going to take some more of my buttercream and I'm going to dye more red rosy red buttercream. अब मैं और red rosy color का buttercream dye कर रही हूँ अपने roses बनाने के लिए. मैं roses बनाने के लिए Russian piping tip use कर रही हूँ. So right now I'm just dyeing the colors, and then I'm going to make roses using this Russian piping tip that I have, and I'm using red gel food coloring. मैं red gel food coloring use कर रही हूँ. Now I'm just going to put my buttercream in my piping bag. मैं अब अपनी buttercream को piping bag में डाल रही हूँ. Again मैंने piping bag में Russian piping tip rose वाला डाला हुआ है. Again I have put the Russian piping tip nozzle which has a shape like a rose. Before you start piping, you want to test your tip. Before आप अपने piping शुरू करें, आप अपने test करो पहले. So now it is a time to make the roses. अब हम अपने roses बना रहे हैं. So I am doing it in the cross so that I can like more equally make the roses. मैं भी अपने cross shape में बना रही हूँ. फिर मैं fill करूँगी पूरा ताकि वो equal हो. It's day 3. अब ये day 3 है, और मैं अपना बाकी का टिप कर रही हूँ केक पाइप, और ये मेरा birthday day भी है, and it's also my birthday now, and we're hard at work. And now what I'm gonna do is I'm gonna take some green I'm gonna dye my buttercream green. अब मैं अपनी buttercream को green color में dye कर रही हूँ, and then I've taken this other nozzle and I'm putting like leaves in the white edges and spots that are white and left over. अब मैं अपना green leaves बना रही हूँ जिधर white spots है ताकि वो fill भी हो जाए. Using the same nozzle that I used to make the leaves, I am piping a border at the bottom. जिस nozzle से अभी मैंने leaves बनाए हैं, मैं साइडों पे border pipe कर रही हूँ. And there you have it, my birthday cake is ready. और मेरा birthday cake तैयार हो गया है.